Welcome all participants. Very good evening. It is my pleasure to welcome you all to AICTE Training and Learning, that is Atal Academy sponsored faculty development program on leveraging machine learning and data science in healthcare and MedTech. Organizing by CSC Data Science Department, Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Engineering and Technology. This program, spanning from January 6th to January 11th, 2025, promises to be an enlightening journey into a transformative power of technology in healthcare. Now, we move to our first technical session of the day, which will be conducted by Dr. Surekha Wankhede. Dr. Surekha Wankhede is a gynecologist and obstetrician practicing since 30 years in Khaparkeda and Nagpur. She was one of the few doctors who brought awareness about the role of sonography in pregnancy among rural Nagpur. She has worked with numerous patients and strived to bring best care and for women and their issues at affordable cost. She has completed her MBBS from MGI MS Sevagram in 1986 and diploma in obstetrics and gynecology in 1989. She is permanent member of Fetal Medicine Foundation New Delhi and Nagpur Obstetrics and Gynecology Society. She has special interest in fetal imaging. She has chaired many sessions in Nagpur and New Delhi. Now, I request Dr. Surekha Wankhede ma'am to share their valuable insights with us. I am going to hand over the session to her. Hello. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Audible? Okay. This is Dr. Wankhede, practicing since 30 years in Nagpur. My topic is deep learning in medical imaging, AI-powered healthcare system. It's mostly about the sonography, as we are obstetric and gynecologists. I'll be speaking more about sonography and less about MRI and CT scans. Sorry, today I have very bad throat and laryngitis, so my assistant will be taking over the presentation. Yeah, am I audible to everybody? Yes, sir, you are audible. You can continue, sir. Yeah, okay. So essentially, madam ka I'll be speaking in Hindi and English, and madam ka introduction to आपको मिल ही गया है. So just yeah, so can you everybody can see my screen, right? Yes, sir. Screen Yeah. is visible. So why this slide is essential is because Surekha madam was one of the few people जिन्होंने बहुत पहले around 15 years ago sonography machine available की थी in a rural area. Now this was an area where there were lots of power cuts. Basic woman जो gynecologist है उनके पास कोई और तरीका भी नहीं था ये पता करने का कि fetus के साथ क्या wrong है. And during that time she had introduced sonography in Khaparkeda. So yeah. So just a disclaimer, we're not allowed to use any patient data या कोई भी ऐसा चीज जिससे कोई भी patient के बारे में आपको knowledge मिले. It can be because only हम लोग यहाँ पे जो ये है the sex of the child cannot be revealed and हमको allowed ही नहीं है. The government doesn't allow under the PCPNDT Act. So आप बार बार देखते रहोगे OBGYN या obstetric और gynecology. ये essentially two words है and gynecology essentially means कि related to a woman's either the fallopian tubes or the ovaries या breast or या कोई भी ऐसे चीज which has got to do with woman. And obstetrics उसमें आ जाता है कि the care of mother from right from the conception to the birth of the child. So इसलिए आप हर जगह देखोगे तो वो OBGYN लिखा रहेगा.
This is the reason why, and this is also the reason why मैडम हमेशा बोलती है कि my hospital is actually a women's clinic, not just a maternity hospital. क्योंकि maternity hospital बोलने से बहुत बार ये हो जाता है कि ओके women think कि if there's something wrong with my body then I should go there. ऐसा कुछ भी नहीं है, and that's why सुरेखा मैडम tries to address the clinic as women's clinic, या हिंदी में बोले तो लेडीज का दवाखाना. So let's switch to medical imaging. मेडिकल इमेजिंग एसेंशियली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स ग्रैबिंग इमेजेस फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी, प्रेफरेबली विदाउट इंटरिंग योर बॉडी. इससे आगे जो कोर्स ऑफ एक्शन है पेशेंट के साथ क्या करना है, वो कोई भी फील्ड का हो सकता है. आपको हड्डी का मेडिकल ये हो सकता है, या व्हाट इज गोइंग, आपके अंदर कोई किडनी स्टोन हो सकता है. So how do we see it without actually before um, before conducting a surgery? So that is where medical imaging का पूरा खेल है. अगर आप देखोगे तो the patient before goes into surgery और before कोई भी surgery intervention होता है, the patient needs to be very sure, and more than that the doctor needs to be sure. तो इसलिए medical imaging का यूज किया जाता है. हम लोग अलग अलग तरीके के डिस्कस करने के अलावा आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन कि एआई ने कहाँ पे हेल्प किया है. बिकॉज मेडिकल इमेजिंग अगर मैं बोलते रहूंगा और मैडम बोलते रहेंगी तो 2-3 घंटे का हो जाएगा. बस वी विल जस्ट फोकस ऑन सर्टेन इमेजिंग टेक्निक्स जहाँ पे एआई ने हेल्प ऑलरेडी कर दिया है और वो एक्चुअली पेटेंट हो चुका है, नॉट समथिंग जो कि डेवलपमेंट में है या 5 साल बाद आ जाएगा, ऐसा कुछ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि एमआरआई ने एआई ने कैसे एमआरआई को बेटर किया. ना एमआरआई एसेंशियली bunch of magnets revolve होते हैं पेशेंट के अराउंड, एंड दोज मैग्नेटिक फील्ड्स टेक लॉट्स ऑफ पिक्चर. एंड व्हेन आई मीन लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स, फिर वो एक पॉइंट के बाद उसको कंबाइन करता है और फिर हमें वो बड़ी सी एमआरआई शीट मिलती है जहां पे वी गेट द जॉइंट फोटोज कि ओके दिस इज द एमआरआई और यहाँ पे दिस इज द प्रॉब्लम या व्हाटएवर आपको प्रॉब्लम डायग्नोज करनी है. सो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये आती है एमआरआई में कि कोई रेडिएशन नहीं होता. इट्स ओनली मैग्नेट्स जो कि तुम्हारे आजू बाजू घूम रहे हैं. आप एक बड़े से सर्कुलर डोम के अंदर जाते हो, यू डोंट मूव अराउंड, यू द मैग्नेट्स अराउंड यू मूव अराउंड, एंड उससे वो इमेज प्रोड्यूस होता है. एसेंशियली यहाँ पे आप अगर आपने कभी एमआरआई किया होगा, आई होप कभी करना ना पड़े आपको, तो आपको बोलते हैं कि अपना चाबी निकाल दो, अपना कोई मेटल वाला क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा वो निकाल दो, एंड यू हैव टू गो लाइक दैट बिकॉज दैट कैन रियली कॉज द एमआरआई मशीन टू मैल फंक्शन. एंड दैट्स व्हाई आपको बोला जाता है कि गो इन एंड go in without any of these things, and they will make you lie down and सोया. अगर आपने अगर आपने से कोई क्रिकेट देखता है तो जस्ट 10 दिन पहले क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह वाज टेकन ऑफ द फील्ड, तो उनका भी एमआरआई स्कैन प्लस एक्सरे स्कैन हुआ था. बिकॉज एमआरआई विजुअली इज वेरी गुड, बट वो बोन को सिंगल आउट उतना अच्छे से नहीं कर पाता. अगर बोन का फोटो, अगर बोन का आपको एक स्कैन चाहिए, सो इट इज ऑलवेज कंबाइंड विद एमआरआई. वो दोनों का बहुत अच्छा इमेज प्रोड्यूस होता है. हेंस द स्पोर्ट्स पर्सन है द फर्स्ट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो रहता है हमारा एमआरआई. सो जस्ट एक इमेज में आपको दिखाऊंगा. दिस इज एसेंशियली घुटने के पीछे का हिस्सा. आई कैन गो इनटू टेक्निकल कि ये क्या है क्या नहीं है, बट if you can see, I'll just turn on my
I'll just turn on my laser pointer. So yeah, यहाँ पे आप देख रहे हो, you don't have to be a doctor to know this. ये एक बहुत सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है, आपका मेरा हम सबका फिलहाल ऐसा ही है. Now this is somebody जो कि कुछ ज्यादा ही डीप स्क्वाट कर दिया जिम में, and that's why उसका MRI, this particular fog and the cloud, ये जो आपको दिख रहा है, this is a torn ACL. यहाँ पे there will be medical intervention necessary by an orthopedician. Yeah, again same चीज. So I have मैडम ने एक वीडियो है कि यहाँ पे AI कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा रिगार्डिंग सम ऑफ द बॉडी बिल्डर्स पेशेंट. तो ये बात है हमारे खंडेलवाल रेडियोलॉजिस्ट की. तो ये रामदासपेट में देयर वाज दिस गाय एंड ही हैड टू गेट अ MRI स्कैन ऑफ हिज ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस एसेंशियली शोल्डर के पीछे का हिस्सा होता है. तो उसको जब मशीन के अंदर डाले तो एसेंशियली वो बहुत बहुत पेन में था, बिकॉज ही हैड जस्ट कम आउट ऑफ अ जिम और वहां पे उसको इंजरी हुई थी. तो उसको मशीन में डाले, उसको फिर रेडियोलॉजिस्ट बोल रहा है कि आप बैठ जाइए ये और बोले. तो ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 मिनट हो गए. तो उसको एट वन पॉइंट पूछा गया कि भाई क्या कैसा लग रहा है. उसने ये आंसर दिया कि भाई साहब जहाँ पे मेरा स्कैन हो रहा है मेरे को वहीं पे दर्द हो रहा है, जिस चीज का आप स्कैन ले रहे हो उसी पे मेरे को दर्द हो रहा है. सो उसको फिर रोका गया स्कैन को एंड देन दे कंटिन्यूड. तो स्कैन गोज ऑन फॉर अराउंड 45 to 50 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन आपका कौन से बॉडी पार्ट का स्कैन हो रहा है. एंड थोड़ा उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है लोगों को कि अरे पूरा बंद है, क्या हो रहा है. थर्ड फैक्टर इज द नॉइस. तो जब मैग्नेट्स आपके आजू बाजू घूमते हैं, they are very loud, very loud. They're as loud as, let's say, a Royal Enfield motorcycle continuously आपके आजू बाजू तक 50 मिनट तक चल रही है. That loud. The patients जो कि रेडियोलॉजी के टाइम पूछते हैं कि अरे ये नॉर्मल है क्या, ऑब्वियसली एक सॉफ्ट सिग्नल रहता है तो वो रेडियोलॉजिस्ट रोक देता है, सॉरी टेक्नीशियन रोक देता है और वो बताता है कि हाँ ये नॉर्मल है, इतना आवाज आता ही है और इतना आवाज 40 मिनट तक आती ही रहेगा. सो ये एक रियल में आपको नागपुर का ही किस्सा बता रहा हूँ. The reason for me to tell this to you is because AI has done something for these kind of patients, and it's something really simple as image processing. So just take a look at this video. Now, there are nearly 40 million MRI scans performed in the U.S. every year. That's according to the National Library of Medicine. And the time needed for patients to be in the enclosed machine to develop is often cited as a case of anxiety. But NYU Langone Health and Meta have now developed a new type of MRI that uses AI to dramatically reduce the time needed to complete scans. Anne-Marie Green has more. Dr. Michael Rex, chair of radiology at NYU Langone Health, has relied on traditional MRI scans for most of his career. It's a great way of looking at the soft tissues of the body. The problem is that you have to acquire a lot of data to get the images, and that takes time. But in 2018, NYU Langone Health partnered with Meta AI Research to develop Fast MRI. The technology uses artificial intelligence to significantly cut down on the time needed to scan without compromising image quality. We're able to increase the speed of the scanning itself by a factor of 6. We put it through a neural network in order to reconstruct the image in a different way using AI to allow us to get image quality that is just as good or better than the fully sampled data. Fast MRI speed brings comfort to patients like Jackie Gianconi, a Long Island resident who frequently undergoes scanning to monitor her cancer's remission. I was frankly a little skeptical, but as time went on, I noticed it went from like 45 minutes to maybe 20 to 30 minutes. It was much shorter. The comfort level is much better. I just listen to music, daydream,
go someplace else, and they're rolling me right out. The technology also allows for Emma Lynn Jufrida, NYU Langone's assistant director of MRI services, and her team to take in more patients. Okay, you'll be all done in 3 minutes. As we're acquiring pictures, we're getting the next patient set up. When they realize how fast it is, their nerves calm down. The patients are very happy to leave sometimes before their appointment time is supposed to even start. Fast MRI is now standard for most patients at NYU Langone at no additional cost. Because we have it on almost all of our machines, every patient who comes in, if we think it's appropriate, gets the fast MRI. In many instances, fast MRI develops more detailed images than traditional MRI scans. This is an image of the knee that was acquired with 8 times acceleration using conventional reconstruction. You can see how noisy this image is. This is exactly the same data as here, except it's using AI to reconstruct it rather than using our conventional technique. Look at the difference. We could never do that using conventional reconstruction. Fast MRI success has Dr. Recht hopeful it will vastly improve accessibility to these scans across the world. Both NYU Langone Health as well as Meta agreed that anything we did was open source. Essentially, every MR manufacturer has used a variation of the technique that we developed and incorporated it into their equipment, which means that everybody now has the possibility of really using fast MRI. Technological breakthroughs like fast MRI are pointing to the promising future of AI in medicine. I really think that AI is going to transform what we do in the next several years. I think it's going to make us better. It's not going to replace physicians. It's not going to replace radiologists. It's really going to assist and augment us and really allow us to take better care of patients in really every aspect of medicine. Okay, you're all done. Anne-Marie Green, CBS News. Okay, so something to note in that video was कि वो essentially कुछ ऐड नहीं कर रहा है उस इमेज में जो आ रही है, उसमें से कुछ माइनस नहीं कर रहा है. इट्स क्लीनिंग अप द नॉइस. और अगर आपको बहुत ही लूज लैंग्वेज में बोलना है, it's a very good image processor. Something that MRI technicians have been struggling for a long time. And इससे क्या होगा? Which I said earlier कि many people feel कि अंदर यार 50 मिनट के लिए मैं लेटा रहूंगा और मेरे आजू बाजू बहुत सारे मैग्नेट्स घूमते रहेंगे. That is the reason कि ये जो नॉर्मल 40-50 मिनट्स के स्कैन्स है, उसका टाइम विल बी लेस, around 20-25 minutes. And the best part is, यहाँ पे as such it's not using intelligence. It's just cleaning up something that already exists. So वो nothing can be better than that. Point to note is इसके सॉफ्टवेयर्स काफी आ चुके हैं. And you might ask me कि अरे अलग अलग सॉफ्टवेयर के थोड़ी ना कोई सब्सक्रिप्शन देंगे या how many softwares one will have to buy. So the problem lies in the maker. For example, हम मैडम के हॉस्पिटल में we use a Samsung color Doppler. Now Samsung अपना कुछ प्रोप्राइटरी बनाएगा और बोलेगा कि हमारा बेटर है. वैसे फिलिप्स ने रिकॉन करके बनाया है, उसके बाद सटल एआई करके है, सटल एमआरआई. That is another thing which is doing the same thing. The good thing about this particular algorithm is कि इन्होंने ये they have kept it open for all. So essentially यहाँ पे एक जो डॉक्टर एक पार्ट बोलता है कि people are using this technology in one form or another. वो इसलिए बोल सकते हैं कि ये they have kept the source code open, which अगर आपको पता होगा Volvo did it I think 40-50 years ago when they said कि okay we will design seat belt, 3 point का हम सीट बेल्ट बनाएंगे गाड़ियों में और हम इसका डिजाइन को पेटेंट नहीं करेंगे ताकि बाकी लोग भी अपने कार्स में वो अपने कार्स में सीट बेल्ट को यूज कर सके. एंड दैट्स द रीजन कि हमारी गाड़ियों में वही पर्टिकुलर 3 point सीट बेल्ट है जो वॉल्वो ने डिजाइन किया था. अगर उन्होंने वो पेटेंट किया रहता ऑब्वियसली दूसरे कार मेकर्स को अपना डिजाइन करना पड़ता. But yeah, ultimately they decided we want people's safety and hence we'll be keeping the design open. So CT scan.
सो एक्सरेज अगर किसी को मालूम होगा, दे आर वेरी गुड एट लुकिंग एट द बोन. और आप काफी सारे लोगों का हुआ भी होगा, एक्सरेज गिव एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ द बोन, बट उसके आजू बाजू का जो टिश्यू विश्यू है, it's really not that visible and ultimately it's a 2D image. यहाँ पे CT scan kicks in not just for bones but many other thing में आप 2D image से ज्यादा कुछ पता कर नहीं सकते. उससे अगर आपको ऑर्थो के आगे जाना है, so you will have to get a CT scan. So right from किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, एओर्टा ब्लॉकेज है, उसके बाद somebody just suffered an aneurysm attack, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के नर्वस सिस्टम से लेके जो प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको सीटी स्कैन का जरूरत पड़ेगा. So the issue which AI tried to get rid of in CT scan is the radiation. अब MRI में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्स घूमते रहते हैं और वो एक इमेज प्रोड्यूस करता है जो कि बाद में कंप्यूटर से ज्वाइन हो जाता है और एक हमें MRI पे शीट मिल जाता है. CT स्कैन में क्या होता है, दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो it's a radiation which can break atoms and we are all made of atoms. उस चक्कर में क्या होता है, there's a lot of hesitancy in doctors और वो बोलते भी है कि अरे CT स्कैन थोड़ा बाद में करते हैं. ऐसा नहीं है कि जरूरी है तो बाद में करते हैं, बट दे विल ट्राई टू लेट्स सी कि एक्सरे और उसमें कितना दिख रहा है एंड ये, और अगर उसका पर्पस है तभी ही CT स्कैन किया जाता है, बिकॉज रेडिएशन इज समथिंग दैट स्टेज अराउंड यू. अब कहने को मोबाइल फोन से भी हमें रेडिएशन मिलता है, बट दिस इज नॉट बैकग्राउंड रेडिएशन, दिस इज प्रॉपर रेडिएशन. एंड दे हैव बीन सर्टेन केसेस जहाँ पे आगे जाके लेटर people had some issues in that either birth या ये, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश AI कर रहा है. Okay, so this experiment was done in Italy. तो उन्होंने they just thought कि okay, what if we can reduce the time taken, तो उससे CT स्कैन का जो रेडिएशन है वो भी कम होगा. एंड हियर bunch of people who said कि चलो देखते हैं, let's train a model which can look at only two things. एक खाली जगह में what is wrong with something and what exactly is wrong. So इसके लिए सबसे पहले इनको चाहिए था डेटा, because almost every AI related thing will state with data. हमारे पास डेटा रहेगा तभी उसको हम प्रोसेस कर पाएंगे, तभी उससे एक आउटकम निकल पाएगा. तो ये बंच ऑफ साइंटिस्ट सेड कि ठीक है हम ट्रेन करेंगे. तो उन्होंने पहले ट्रेन किया और एक खाली सिलेंडर जगह में they just put a phantom का मतलब होता है something that does not exist. तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखा कि वो पर्टिकुलर इमेज में इज देयर कोई अनयूजुअल ऑब्जेक्ट और वो अनयूजुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है. सिर्फ दो क्राइटेरिया रखे एंड उन्होंने उसके बाद ये डेटा ऑब्वियसली डेटा सेट में डाला एंड दे फाउंड आउट कि जो मशीन था it was able to achieve around 94% success, which is pretty good. और ऑप्टिमाइज और भले आप बोलो कि ओके किसी छोटे पार्ट का स्कैन है तो जल्दी हो जाएगा ये वो, ये this was able to greatly reduce the time required in reaching a conclusion regarding a patient's diagnosis. So this resulted in overall कि okay fine, we can reduce the time, we can reduce the radius. So AI definitely यहाँ पे help कर रहा है, but again you have to remember कि इन्होंने 30,000 यहाँ पे 3,000 labeled CT images were created. तो उसमें पहले humans ने ही पार्ट लिया, फिर वो इंटेलिजेंस बन गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस AI बन गया.
Okay, so let's talk about ultrasound now. A major difference between MRI, CT scan, and ultrasound is ultrasound ना तभी के तभी हो रहा है. It's not something आप बाद में प्रिंट करके देख सकते हो. आप उसका इमेज इनहांस बाद में कर सकते हो. It's happening then and there. So part of technology that is going into it, it's Doppler effect. वो मैं आगे आपको वीडियो के थ्रू ही समझा दूंगा. Essentially बहुत सारी लाइंस बनती है टू अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्योंकि ह्यूमंस सिर्फ 20,000 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं. उसके आगे जो भी है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स है. तो यहाँ से जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो लाइंस बनाते हैं, एंड वो लाइंस के अंदर इमेजेस रहती है, तो वो हमें दिखती है. और जो भी द फीटस इनसाइड द मदर, वी कैन लुक एट इट. अगर आप में से किसी को किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन छुआ होगा, they tell you to get an ultrasound. And this is the मतलब बहुत सारी चीजों पर, राइट, बी इट पैनक्रियास, बी इट फैटी लीवर, बी इट कोई एब्डोमेन का इशू, तो उसमें अल्ट्रासाउंड आपको रेकमेंड किया जाता है. एंड जस्ट ब्रीफ, या, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. Yeah, right from tumors to kidney stone to breast cancer detection to the blood flow of a fetus. ये इसमें the blood flow will be through a color Doppler, which is obviously slightly more expensive. तो ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड में दिख जाती है. Okay, so why do we use ultrasound in a hospital? Very simple. We use it to determine how is the fetus doing. Is it of a proper shape and proper size regarding अगर वो 2-3 महीने का डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट उसका प्रॉपर है कि नहीं. उसके बाद वी लुक फॉर अनॉमलिटीज. कि अनॉमलिटीज पहले बहुत लेट डिटेक्ट होती थी, या ऑलमोस्ट ऐसा था कि बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद ही पता चलता था. बट बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड we can look at things, and we can look at particular things like डाउन सिंड्रोम हो गया, या ये पर्टिकुलर कोई परफोरेशन है बच्चे को, ब्लड फ्लो का इशू है, हार्ट उसका कैसा है, तो वो सब यूएसजी के थ्रू हम देख सकते हैं. एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द पेशेंट, एंड all these things are conveyed to the parents, everything except the sex of the child. इंडिया में नहीं अलाउड है. many countries in outside India they allow it, but India में allowed नहीं है. So yeah, all these things we have to convey, and in a way it's good for parents कि उनको पता चलता है कि okay, the baby is healthy, the baby is not, what is the course of action. Okay, so यहाँ पे रेडिएशन का कुछ इशू है नहीं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे there are no magnets and all, there are no कोई ionizing radiation है नहीं. That's why इस बेबी के लिए हेल्दी है, वो उनके सॉफ्ट टिश्यू के लिए हेल्दी है. You just need a probe and if you know the sonography gel, and वो लगा के without doing any invasion, without doing any procedure, people, doctor can figure out what's going on with the baby inside the mother.
Is the sound of the video audible to everybody? So I'll send you the links to all the videos and EA क्योंकि शायद sound का भी issue है. Yeah, so this is a very good image of a cleft lip. आपने बहुत ये लोगों में देखा होगा. This is something जो कि पहले हम diagnose नहीं कर पाते थे, and we could only find out about after it was after the baby was born. And because of certain, as you can see, this particular shape, it's very, इससे दिखने में काफी easy हो जाता, पता चल जाता है कि हमें okay, this particular cheese is, this particular fetus is going to ultimately have a cleft lip. Okay, so this is a color Doppler, slightly advanced thing. यहाँ पे if you see the fogginess यहाँ पे कम है, ये बहुत ही straight lines है, and the fogginess here is less. Essentially वहाँ पे एक decision gynecologist को लेना पड़ता है कि delivery जल्दी करना पड़े या let's not wait for a lot of time and पहले ही हम बच्चे को deliver कर दें so that we can later determine कि okay, we need to put him in the incubator and figure out कि what is particularly wrong with this kid. And medically, we have to give the kid the best possible chance of, survival and ultimately, keeping the promise that we made to the parents. So yeah, something ये पहले बहुत मुश्किल था पता करना. Thanks to color Doppler, this has become very accessible now. Again, the same thing as said. 3-4 महीने में obviously जैसे trimester complete होते जाते हैं, the visibility of defects also increases, but as early as 12 हफ्ते 16 हफ्ते में काफी चीजें हमें पता चल जाती है regarding the fetus, so that ultimately it just helps the kid and the mother. So just for reference, ultrasound is as said 20,000 kilohertz के ऊपर जो भी है वो हमें सुनाई नहीं देता. अगर आप अभी भी अपने मोबाइल के इक्वलाइजर में जाओगे तो ये जो ऑडिबल रेंज है, गाने आप जिंदगी में जितने भी गाने सुने आपने वो इस रेंज के अंदर होते हैं. 20 किलोहर्ट्ज यू कैन चेक इन योर फोन राइट नाउ. एक इक्वलाइजर नाम की चीज होती है, वो इसी पर्टिकुलर दायरे में घूमते हैं. 20 हर्ट्ज इज द बेस एंड आई थिंक 20,000 हर्ट्ज इज द ट्रेबल ऑफ द सॉन्ग. उसी पर्टिकुलर रेंज में होता है. सो या दिस इज वेरी सेफ.
for the child and the mother. Yeah, this particular image, again, no patient image was used here. We just got something off the book. And you can see ultrasound showing twins so that parents can be financially ready. Again, we can only reveal that it's twins. We cannot reveal the sex of the child. So यहाँ पे parents के लिए भी अच्छा हो जाता है. They know what's coming and what to expect. Now, if almost all images यहाँ पे आपको एक blank space दिखेगा, वो होता है amniotic fluid, which basically cushion provide करता है for the kid, and the images are incredibly detailed, and ultimately it helps the sonography करने वाले को भी help करता है डॉक्टर को, और इनको भी help करता है the parents, so there are no surprises later. Yeah, as I said, Phillips syndrome, Down syndrome, it's a very straightforward thing. The NT here refers to mucus translucency. अगर increased है, you can see यहाँ पे सीधा यहाँ पे, even if you're not getting it, यहाँ पे ये है, तो translucency वो पूरे तरह से नहीं होना चाहिए. इसको NT, इसको neutral mucus translucency बोलते हैं, and we can predict the kid will be born with Down syndrome. और ये सब हम पहले ही predict कर सकते हैं. Okay, so coming to our topic, NVIDIA as well as GE Healthcare, they tried to do something for our gynecologists and the doctors who use gynecologists who use sonography, and the software was called SonoSamTrack. Essentially, what it did was उन्होंने बहुत सारे ऐसे उसमें feed कर दिए images कि what is the anatomy of the baby, and उसमें अगर कोई lesion है या something wrong है तो वो पता चलेगा. What they tried to do was very ambitious because, as I said, it's sonography is not like MRI कि आप print निकालोगे, उसमें उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख पाओगे. Sonography is happening real time. The probe is moving on the woman's stomach, and patient के stomach पे तभी आपको दिख रहा है. So यहाँ पे they have used a lot of images, but they have made it fed the videos to these particular images. Now उसमें मैं एक issue बताता हूँ. All these ये जो part लिखा है कि they also included scanning devices and outperformed competing methods by a substantial margin. ये एनालिसिस किसने किया? खुद GE हेल्थकेयर ने किया. नाउ ऑब्वियसली इसको एक्शन में देखना मुश्किल है, एंड यू कैन स्टिल फाइंड वीडियोस ऑन द इंटरनेट. मैडम ने डेलिबरेटली इसमें पुट नहीं किया बिकॉज अल्टीमेटली उनके वेबसाइट में दिस वाज द क्लॉज रिटन. नाउ इसके पहले बी इट फिलिप्स का एमआरआई जो था या सटल एमआरआई मैंने आपको बताया था, all these are approved by FDA. This particular thing is not. So यहाँ पे even if ultimately कल को जाके something great comes up for color Doppler या ultrasonography of children, तो यहाँ पे ना it has to be done through a supercomputer only. Supercomputer we normal people cannot buy ultimately, and एक बहुत ज्यादा उसमें अपार्ट फ्रॉम खर्चा एक ये सद्दत आ जाएगा कि उसमें यू विल हैव टू ट्रेन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ वेरी 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 हाई लेवल, बिकॉज अगेन CT scan, printed sonography is happening in real time. So yeah, something to look through. GE Healthcare ने ये भी बोला है कि yeah, as I said, cost. And अब आगे जाके शायद ये भी देखोगे कि एक फिलिप्स का ये है, एक GE का ये है, एक सैमसंग का है, एक सीमेंस का है. वो इसलिए है क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अपने इसमें ही यूज करना चाहता है. सीमेंस वाला बोलेगा कि अरे ये हमारा सीमेंस का है, डॉपलर है, आप तो इस पर्टिकुलर इसमें हो. देयर इज ऑब्वियसली अल्टीमेटली कि आप डॉक्टर कितना अच्छा देख सकते हैं.
फाइनली उनका ही से रहेगा इन द सो तारीफ तो बहुत हो गई. लेट्स फोकस ऑन limitations, and there are many. Okay, so again, something wrong with the video, but I'll still show you the parts with images. So I'll just say what the video is saying so that everybody gets. So diabetic retinopathy is a leading cause of blindness among many people. So जब ये Google were working on an AI model to figure out कि diabetic retinopathy के patients को हम कैसे we can help, that's when they figured something that they were not looking for. एक particular eye scan से आप cardiovascular risk निकाल सकते हो किसी patient का, and that was the starting point of Google and AI in healthcare. So just I'll play the video, obviously without the song. So the place in India where it was implemented was Arvind Eye Institute, and they had a pretty good success rate of predicting various related to cardiology. बहुत सारे उन्होंने डिटेक्ट कर पाए थे. Yeah, so जब उन्होंने सेम चीज थाईलैंड में करने की कोशिश की, वहां पे इमेजिंग वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो नर्सेस को बोला गया था either to use a particular kind of camera, और ये उन्होंने वो शायद यूज किया नहीं, and despite using a better camera they were not able to get the same kind of accuracy in Thailand what they did in Arvind Eye Institute and in India overall. So yeah, particular instrument use करने से it's as finicky कि उतना change आ सकता है. Something that made a lot of noise 2024 में या 2022 में actually, which was skin cancer just detection using just your mobile camera. And that was obviously some media hype क्योंकि we need a specialized camera for that. तो उसके बाद क्या हुआ ना, people realized, especially जो डॉक्टर्स थे उन्होंने रियलाइज किया जो डेटा फीड किया गया था इन पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स को, दैट डेटा वाज बेस्ड ऑन यूरोप, मोस्टली अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, गोरे. उसमें जो बहुत सारे स्किन लीजन्स थे, अगर मेरे तरह सावले या आपकी तरह नॉर्मल, जो उसमें वो बराबर परफॉर्म कर ही नहीं पाया अगर आप किसी डार्क स्किन पर्सन का ये स्कैन करो, और इट जस्ट वो स्किन लीजन को डिटेक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि ओ इट्स नॉट वर्किंग. सो दिस इज समथिंग आई विल ऑल गिव यू द लिंक्स टू. नाउ IBM वाटसन हेल्थ, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा क्योंकि 2012 से they were trying to get artificial intelligence into healthcare. And yes, I said 2012, not 2022. 2012 से उन्होंने बहुत कोशिश की कि विल ट्राई टू रेवोल्यूशनराइज राइट फ्रॉम MRI से लेके पेशेंट का जो आउटकम है उसको मॉडिफाई करने का, मेक लाइफ इजियर, एंड दैट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड इन 2022 जब बाकी लोग AI की बात करने लगे इन हेल्थ केयर. अल्टीमेटली उनको अपने सेगमेंट करके बिजनेस बेचने पड़े कि अरे तुम इतना ले लो, दैट वाज द रीजन. सो as such I'm not an expert, but somebody who has worked in the medical
slash AI field and machine learning. Unka, I was able to get an article and he said something very good. Yeah, so just a overview of what was Watson Health. So patient के hospital में आने से लेके right from the exit, they wanted to implement AI on everything. And remember, this was done in 2012. Ultimately, 2022 में it was sold. So yeah, the reasons. The person is Sandeep Konam. Do look him up if you want to know who he is. उन्होंने अभी खुद की एक कंपनी खोल ली है. Already raised $15 million. Also in the medical and AI field. So उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था. So I'll just be sharing. उन्होंने जो कहा कि क्यों AI उस समय में एक डिकेड पहले नहीं हो पाया and where did Watson go wrong. So यहाँ पे था काफी एक स्टिमुलेशन में रखा था और जो डेटा फीड किया गया था it was hypothetical cases. Now obviously we're not going to use AI in hypothetical cases and in perfect conditions. और उसके ऊपर ये आप जो सेंटेंस देखोगे it's a red flag after red flag. So first is it was not trained by real patient data. So first red flag यहीं पे आ गया. फिर hypothetical cases, second red flag. Third red flag, provided by a small group of doctors in a single hospital. एक ऐसा भी नहीं कि 10 हॉस्पिटल के फीडबैक लिए गए थे, नो, सिंगल हॉस्पिटल. सो या यहाँ पे ही अराउंड ये 2016 की बात है, यहीं पे जो पार्टनरशिप्स थी उनके हाई प्रोफाइल इनके साथ हॉस्पिटल्स के साथ, वो यहाँ पे ही द डील डिड नॉट वर्क आउट एंड दे सेड वी आर डन, वी आर नॉट गोइंग टू यूज योर सॉफ्टवेयर एनीमोर. तो एज सेड ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ये पूरे स्टेटमेंट में. हाइपोथेटिकल with a small group of doctors, and that too from a single hospital. So yeah, that was one of the reasons why it failed. Now, I'll give you a very simple example. If you go to some big hospital, वो पहले ही बोलते हैं कि आप ये फीस जमा कर दो consultation. Now, what madam does in our hospital is you first do the consultation, then you give the fees. This is how it works. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं where Watson wanted to replace everything और वो कंसिडर ही नहीं कर पाया कि भाई दो हॉस्पिटल अलग अलग तरीके से काम करेंगे. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई जो कि they could have done it better, but उनको मॉनिटर शायद करना ही नहीं था. एंड अल्टीमेटली वो एक जो खौफ होता है कि we have to be the first mover advantage जिसको बोलते हैं, वो they had that kind of desire to be the first mover, and as a result they said अरे जल्दी, and as a result they never retrained their AI. That was a big problem. Again उस पे attention बहुत ज्यादा था. People poured a lot of money into it, and these were some big bureaucrats. और तो काफी हद तक वो मार्केटिंग इतना ज्यादा कर दिया था कि हाफ बेक्ड प्रोडक्ट उन्होंने पेश किया, एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी. सो या इन ऑल द केस स्टडीज आप देखोगे आईबीएम वाटसन का, वहां पे ना उन्होंने बहुत जगह परसेंटेजेस को साफ साफ बताया नहीं कि this percentage of accuracy is there. Whereas if you remember the Italian case study, the CT scan, they were very happy to show so 94% से ज़्यादा accuracy मिली. And percentages are a very strong thing. Percentages are very strong in everywhere, right from the stock market to the reliability of a particular model. So they were never clear about कि कितना percent accurate है, and that was a big problem because as the example here says कि if autonomous vehicle के अंदर तुम बैठे हो
और उसको एक सर्टेन पॉइंट के बाद समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कंट्रोल नहीं करने वाला, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और द कार विल कम टू अ कंप्लीट स्टॉप. So what IBM was never able to put a number on things, and that was a big problem because unless अगर आप वो number नहीं देते हो, it can be obviously many things. Starting में तो कोई accurate रहते नहीं, 50% accurate, but वो कभी बताया नहीं. And there was a big problem with doctor who wanted to adopt the technology, and finally they said, okay, enough is enough. We can do the same thing. We might be slower than few minutes, but yeah, we need numbers. We need hardcore numbers because numbers are something that don't lie, and this applies to almost every phase of life. Misaligned goals. So I'm not going to say the word bureaucracy here, but अगर कोई भी XYZ प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से ऑब्वियसली पहले वो रहेंगे द पीपल हु हैव पोर्ड मनी इनटू इट, सेकंड रहेंगे ऑपरेशंस वाले गाय जो कि एक्चुअली उसमें काम कर रहे हैं, एंड देन रहेंगे इंश्योरेंस पार्टी वाले लोग. बिकॉज रिमेंबर राइट नाउ जो इंश्योरेंस का इंडिया में सीन है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस है. हाउ दे वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू एआई वी विल नेवर नो. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो वॉटसन ट्राइड टू कीप एवरीबडी हैप्पी, एंड इन लाइफ यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी. सो IBM 10 सालों तक उन्होंने कोशिश की कि will make everybody happy, but that did not happen, and that's why they wanted to rush to be the first mover in a particular field, and again that failed rather spectacularly. The image here is not related to Watson. It's just कि अभी जो funding आई है 25%, as I said, everything is about percentages in life. तो 25% जो AI में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हेल्थ केयर एआई में, which is a big margin. So let's see how things go from here, because as of now they have really helped MRI, they have really helped CT scan, and ultimately we have to remember AI is only as smart as we make it. The problem is known as garbage in and garbage out. You can look it up. उसमें कचरा उसमें डालोगे तो कचरा ही निकलेगा. So training, there have been models जो कि 6-7 साल से सिर्फ ट्रेन हो रहे हैं, and people are actually focusing on that, क्योंकि तुम ट्रेन जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा वो लर्न करेगा, उतना अच्छा उसके पास डेटा रहेगा. यहाँ पे एक नेसेसरी समथिंग विच वॉटसन के केस में था कि मोर डेटा इज नॉट नेसेसरली गुड डेटा, एंड आई कैन पुट अ लिंक टू दैट लेटर. ऐसा नहीं है कि ज्यादा डेटा है तो अच्छा है. द डेटा शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. उसमें दोनों चीजें हैं. बट या द फिफ्थ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉटसन वाज कि जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी खुश करना था, जो एक्चुअली काम कर रहे थे उनको जल्दी जल्दी कर रहे थे, एंड उनका फिर हुआ ही नहीं. अल्टीमेटली वॉटसन को बेचना पड़ा in 2022. So yeah, just want to end on a lighter note. Something that happened in I think Scotland में हुआ था. उन्होंने डिसाइड किए कि हम कैमरामैन नहीं रखेंगे और हम एक AI कैमरामैन रखेंगे जो कि बॉल को ट्रैक करेगा. उसने क्या किया, वहां पे जो रेफरी था वो उनके बाल नहीं थे, उसने उसके सर को ट्रैक करना शुरू कर दिया. जस्ट अ वीडियो ऑफ दैट. So this is the end of the presentation. Enjoy the video. Yeah, so बॉल यहाँ कहीं पे है और ये कैमरा वापस इधर आ गया. अगेन कैमरा वापस इधर, बॉल as you can see वो रिफ्लेक्शन में एक्चुअली सेम दिखता है, so you cannot blame the AI. Here you can see बहुत हद तक सेम है बॉल और उनका सर. So yeah, something funny to end with. Ultimately it's not going to be who is first to the AI race. It's going to be who makes better predictions and who has got a better data set and who has fed the most data so that different ethnicities के लोग
different walks of life can actually be accommodated. And so yeah, that's it. If you have any questions, आपको लेना, do yeah. हाँ, Hello. yeah. If you have any questions, If you have any questions. yeah, Akash. Very nice and informative. Thank you. ठीक है, नहीं है, question नहीं है कोई। Any questions? Hello. आपको अपना माइक चालू करना पड़ेगा। Hello. हाँ जी, आपको अपना माइक चालू, हाँ जी बोलिए। Anything you want to ask? उनका शायद माइक का कुछ इशू है। Actually, ma'am, we are नहीं, going to take questionnaire from participants after your presentations. We will provide Okay. participants some time so that they can ask your questions and you can answer them. Okay. you need to stay. I need to stay here. Hello, Saira. Hello, yes, ma'am. I need to stay here. Ma'am, to answer the queries of participants, your presentation is over, ma'am. Yes, yes. Okay, ma'am. Hello. So, dear all participants, Hello. Am I audible? dear all participants, the session has come to close. If the participants have any queries, you can ask to our experts. Our expert can answer your Yeah, Sayan, questions. I have a question. Yes, I have a question. Can I ask for it now? Yes, Yes. sir. Continue. Yep. So Hello, I wanted to ask Akash. about like, yes, am I audible? Yes, yes. Okay, Yes, you perfect. I are. wanted to ask something about, okay. So I wanted to ask about the obstetrics and gynecology domain that we were just presenting on. So I saw like Yeah. most of the use case that you were working with that was for mostly imaging data, as well as I'm Yeah. presuming that it's mostly going towards the computer vision side and the AI. So I wanted to understand, like, are you also taking this into a field of natural language processing using text analytics, or maybe any AI related to NLPs or large language models, or maybe GPTs of that matter? So what's your thoughts on that, or how do you proceed, or what do you think like is the scope in that side? Yeah, basically, it's really exciting AI, but images, they are taken in real time. So, where movement of the limbs of the baby or opening of mouth or anything like that, they will face challenges. So, it is totally operator dependency. And to include AI, we will need robust data, which is not there because privacy of the patient is there. So it has ethical and legal concerns. At present, we are mainly in the field of some algorithm which is fitted into the computer with the age of the patient, BP of the patient, and some parameters so that we can say whether she is going to develop some particular disease regarding pregnancy or not. Some of it we are using. Hello? Okay, so mostly it's around the image data itself, right? Yeah, mostly it's image data.
Okay, got it. Actually, I was thinking on this side of to integrate into textual based system here. So is that like just a general question on this? Like if in case like someone or some researcher is trying to implement a textual based analytics, so is there a data integrity issues that will come up in the future, or should we make this as a Yeah, yeah. concern that data integrity should be handled, and how should we handle it so that we can build a robust system at the end? Yeah, basically data building will take many years. And standard data, it will be passing through many stages. Even the government should allow us the patent of that, right? Right, Hello? right. No, Yeah. but if in case like there are some, yeah, if in case like there are some open source material present online, like from some publications which are like highly recognized and highly renowned publications, so will that do in some cases, or like will it still fall into data integration and PII issues? No, no, we can follow, but still we will have to study more data because after all, it's a patient life, right? So computers Right, cannot be right, human. agreed, You know? Computers cannot be human, and still human agreed. examiner touch is different. So what really matters ultimately is the good health of the patient. So here, if we are more Mhm. relying on AI, even legal issues will be there. Who is responsible, the man or the machine, right? Right. Uh, So there's a lot of, I maybe 10 or 15 years, it will surely come, but it will boost our work. It will boost our work, it will lessen the burden, and then it will make our lives easier, but it cannot replace one. Agreed, agreed. Yes. Okay, okay, Thanks so much. That was my question. okay. Any other participants want to ask their question? They can My ask question is also. related to, yeah. Sure, sure, sure. I'm audible, I guess, right? Yes, yes. So my question is related to the MRI case study. So like previously we are taking a 40 to 45 minutes to get a image from the MRI machine. So Yeah, now using the Meta AI, it reduces to 20 to 25. So I need to say like after the 2025, the MRI machine giving us an image which is having a noise, and Meta AI actually reducing that noise, right? So yeah, like yeah. how much accurate that image is related to the doctor, and like as a researcher, how we can find out whether that image is readable as per the doctor's standard. That's where it's different from the AI. Doctors are person in anatomy, physiology, and everything of the patient, the disease and the normal patients. But still, as a we are from the engineering background and we are the researchers, so like how we can find out like that image is readable as per the doctor standard, or Meta AI is that much accurate to to give that image readable for the doctor. Yes, yes, it's readable for the doctors. But as a like general researcher, how can consider this image is as per the doctor standard, so that we can do some more research according to us. See, anything which has specificity of 99% is taken as positive. So you have to study basically anatomy and physiology for that. Medical science is also not very specific science. It is differ from one patient to another, right? Therefore, Yes, but we still believe that after predicting the image, it is accurate, like having a like fracture or something like a tennis elbow or like short descript of the veins. Do you think that it is that accurate by using a meta AI? yes, yes, 99.9% is accurate, but then you have to use your clinical knowledge. Sometimes you have seen they write, please
correlate clinically. So clinically, you have to be knowledgeable for that, whether it's right or wrong. Sometimes what happens, the patient is more comfortable, even if the things show fracture or something like that. So then you can delay the treatment, like it can repair on its own. And suppose the patient is in pain, then you can say you have to be taken for emergency. Thank you. Okay. Hello. Hello, dear participants. Is anyone interested to ask their queries to our expert? You can either talk or you can type your query in the chat box. Okay, so I think are our participants are fully satisfied with the session. So, shall we conclude the session, ma'am? Okay, we can. We can. Thank you, ma'am, for sharing your expertise with us. Your lecture was highly informative and helpful. It was incredibly enlightening. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. Dear participants, with this, we come to the end of our first session. Thank you all for your participations. We invite you to remain online as our second session will begin at 7:30. Please be remain online.